I am repeating this part, metabolism part. So after the absorption of drug will be distributed in the body, and after the distribution, it will go at the site of action. It will show its pharmacological action, and after that, there is a metabolism of drug. So what do you mean by metabolism of drug? So it is nothing but it is also known as a biotransformation. It is also known as a detoxification. So biotransformation, detoxification, metabolism, all these terms are the same terms. So for the absorption, you need a water soluble drug, and for the elimination in the urine, because urine is the most of the drugs they are eliminated through urine, right? So urine is the very important route of elimination. So for the removal, you need a water soluble molecule, and there is a function of metabolism or biotransformation to convert a lipid soluble drug into water soluble drug. In the another word, you can say biotransformation is nothing but the transformation of drug or alteration of drug in a system, okay, in the biological system. So alteration of drug means conversion of drug from one form to another form. So biotransformation means conversion of drug from one form into another form, which may be active or inactive. Most of the time it is inactive, but sometimes it may be active if the drug is a product, and sometimes active drug is also converted into active metabolites, right? So we'll see it in upcoming slides also. So what is the main aim of metabolism? Main aim of what is metabolism or biotransformation of detoxification process is nothing but the to make a drug water soluble. So for the absorption you need a lipid soluble drug. For the absorption you need a lipid soluble drug, and for the removal or for the elimination you need a water soluble drug. And there is a role conversion of lipid soluble molecule into water soluble molecule, that is done by the process of metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या करता है आपका, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल ड्रग में बनाने का काम किसका है बॉस? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा फिर? सो देयर इज एडिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स, देयर इज एडिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पोलर ग्रुप्स। और नया साइन के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पार्ट के ऊपर। सो कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म नोन एज अ metabolism or biotransformation. So transformation or alteration of drug in the body known as a biotransformation. What is the main aim? To convert lipid soluble drug into water soluble drug. So what is the main aim of biotransformation? To convert lipid soluble drug into water soluble drug so that it can be excreted from the body easily. That is the main aim. Another aim is nothing but the okay. So another main aim of biotransformation is nothing but the inactivation of drug. जो एक्टिव ड्रग है उसको इनएक्टिवेट करना है, क्योंकि उसको रिमूव भी तो करना है. सो मेन एम ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन इज टू मेक अ lipid soluble drug into water soluble drug and to inactivate the drug. That is the main aim. So it is done in the body in the various tissues. बॉडी में आपके डिफरेंट टिश्यू है, डिफरेंट टिश्यू हैज डिफरेंट मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट द लिवर. सो मेटाबॉलिक फैक्ट्री metabolic factory of your body is nothing but the liver, and it metabolizes the drugs as well as xenobiotics. The term xenobiotics sometimes it is used for the foreign chemicals. अगर कोई foreign chemical है, drug is also a foreign chemical, so you can say it is a xenobiotics. So xenobiotics means drug or foreign chemical, but drug is not always a xenobiotics. Sometimes drugs are your own peptides or altered peptides, amino acids, etc. Metabolism is the process of conversion of unionized drug into ionized drug, or conversion of water soluble molecule into lipid soluble molecule. It is also known as a detoxification process. Metabolism is also known as a detoxification process. You should be clear about this. Okay. After the end of metabolism होने के बाद में आपको कौन सा product मिलेगा? Water soluble product. You will get a water soluble. Now metabolism normally this. What are the outcomes of metabolism? We have already seen different outcomes. So there is a inactivation of drug. Most of the time क्या होता है कि जो एक्टिव ड्रग है आपका जो आपने लिया है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा. Another outcome is there is a generation of active metabolite. If your drug is a generation of active metabolite, तो एक्टिव ड्रग दे दी आपने तो उसका इनएक्टिवेशन होता है, या फिर आपने कोई प्रो ड्रग दिए तो उसका एक्टिवेशन होता है. सो एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग इनसाइड द बॉडी, एंड अगेन जो एक्टिवेटेड जो ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है वो दिया है तो उसका मेटाबोलाइट भी बनता है. फर्स्ट इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, second activation of inactive drug, third generation of active metabolite of already active drug which is having similar action, or generation of active metabolite from active drug which is having other action. There are different outcomes for the metabolism. Now another outcome is nothing but the
activation of pharmacologically, okay, that is a product. Occasionally activation of pharmacologically inactive drug into active drug, that is a product. Okay, then toxicological activation is also there. Rarely if you ingest any poison, suppose आपने कुछ पेस्टिसाइड ले लिए, पेस्टिसाइड ऑलरेडी, पेस्टिसाइड क्या होता है, दैट इज अ पॉइजनस, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी दैट पेस्टिसाइड इज कन्वर्टेड इनटू मोर टॉक्सिक मेटाबोलाइट, that is known as a toxicological activation. So drugs which are easy to metabolize, they are known as a soft drugs. Those drugs which are hard to metabolize, or those drugs which resist the metabolism, known as a hard drug. फिर जो ड्रग इजीली मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में उनको बोलेंगे सॉफ्ट ड्रग, और जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को रेजिस्ट करते हैं बॉडी में उनको बोलेंगे हार्ड ड्रग, राइट. You have to remember this different organs for metabolism. Liver has a highest capacity to metabolize the drug. सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज करने वाला कौन सा ऑर्गन है, लीवर. After that lungs has a capacity, after that kidney has a capacity, intestine, placenta, then adrenal gland, and then skin. So skin has the lowest capacity to metabolize the drug. सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म किसमें होगा, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा. ठीक है, लीवर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है आपका ड्रग का. सबसे कम मेटाबॉलिज्म का आप होगा स्किन में. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके. सो which organ has the highest capacity to metabolize the drug? Liver. Okay, so you have to remember liver, after that lungs, after that kidney, after that intestine, after that placenta, after that adrenal, and after that drug metabolizing enzyme. जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए एंजाइम लगेगा आपको, so that may be either microsomal or non microsomal. Microsomal enzymes मतलब क्या, so if enzyme is from the liver cells, जो liver है आपका वहां से एंजाइम से, इसको बोलेंगे microsomal enzymes. So liver origin enzymes, they are known as microsomal enzymes, and non-liver origin enzymes, they are known as non-microsomal enzymes. Okay, so microsomal enzymes मतलब क्या, liver के सेल से आता है, बट कहाँ पे होता है. So mostly microsomal enzymes, they are cytochrome enzymes, and they are present on the smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ ज्यादा information, but you have to remember. So mostly जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं माइक्रोसोमल या नॉन माइक्रोसोमल. माइक्रोसोमल मतलब लीवर ओरिजिन, नॉन माइक्रोसोमल मतलब बाकी ऑर्गन में, जैसे जीआईटी में होता है, किडनी में होता है, प्लासेंटा वगैरह. सो नॉन माइक्रोसोमल. माइक्रोसोमल एंजाइम्स मींस व्हाट, सो दे आर प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ योर लिवर. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है लिवर सेल का, तो वहां से वो आते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स. दे आर साइटोक्रोम एंजाइम्स. So what are the effect of biotransformation? We have already seen two times, but once I will again revise. So first inactivation of active drug. जो active drug दे दी आपने उसका inactivation हो जाएगा. So for example inactivation of chloramphenicol and other drugs, right? Then activation of prodrug. अगर prodrug है तो उसका activation हो जाएगा. So activation of prodrug which is therapeutically useful. आपको useful होगा therapeutically. ऐसा कौन सा activation? Activation of levodopa into dopamine. So therapeutically useful. Therapeutically useful. So inappropriate to inappropriate again. And toxicological activation like paraxone is already toxic, तो उसका parathormone is already toxic, उसका एक मेटाबोलाइट बनता है, उसको बोलते हैं paraxone, that is more toxic than parathormone. Now generation of active metabolite from active drug. So जो ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा. पहले क्या है, मोर एक्टिव मेटाबोलाइट. एक ड्रग है उसका, जैसे डायज़ेपाम इज अ सेडेटिव हिप्नोटिक used in the anxiety treatment, used in the your epilepsy. So इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, नाम है उसका oxazepam is more active than diazepam. So a generation of active metabolite having different action, like pethidine is a CNS depressant drug related to your opioidal drug. It is a CNS depressant, but after metabolism it is converted to one metabolite known as a norpethidine, which is a CNS stimulant. So generation of active metabolite having different action, we have already seen this, that's why I am taking fast. मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाय, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन करता है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स. मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स दे मेटाबोलाइज द ड्रग. सो दे आर ऑफ टू ओरिजिन. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द माइक्रोसोमल एंजाइम. माइक्रोसोमल मींस दे आर प्रेजेंट इन द लिवर सेल, particularly smooth endoplasmic reticulum of liver cell. So in that you have oxidation reaction के लिए कौन सा होता है, cytochrome P450, then flavin monoxygenase. So these two are responsible for the oxidation reactions. Okay. Now cytochrome P450 means what? These are the enzymes of liver origin which absorb the UV light at a 450 nanometer. That's why they are named as cytochrome P450. Then glucuronide conjugation के लिए जो enzyme लगता है वो reduction के लिए लगता है, hydrolysis के लिए लगता है. So these enzymes they are of microsomal enzymes.
Now non-microsomal enzymes, they are not of liver origin, they are of different origin. Mostly they are required for phase second reaction. So all the phase second enzyme except glucuronide conjugate. So glucuronide के लिए जो लगता है वो phase glucuronide के लिए conjugation के लिए जो लगता है that is a microsomal enzyme. All other phase second reactions like sulfate conjugation, glutathione conjugation, then acetylation, methylation. So for that you need a non-microsomal enzymes. So these are nothing but the two types of enzyme, microsomal and non-microsomal, right? Non-microsomal enzymes are also responsible for the oxidation, reduction and hydrolysis. ये तीनों के लिए. Next one is nothing but the, you can see again outcomes of metabolism. तो क्या क्या हो सकता है? एक्टिव ड्रग जो लिया है आपने उसका मेटाबॉलिज्म होके क्या बनेगा? इनएक्टिव ड्रग, राइट? एक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग, मेटाबॉलिज्म जो ऑलरेडी इनएक्टिव ड्रग लिया है आपने, प्रो ड्रग, that will be activated and converted into active metabolite and then inactivation. Inactive drug conversion into active metabolite after metabolism and then again inactivation. जो already active drug है उसका active metabolite भी बन सकता है. So active metabolite, okay, and after that inactivation. So these are the outcomes of metabolism. We have seen already 2-3 times. Now metabolism is carried out in or it is done in a two different metabolic reaction. तो मेटाबॉलिज्म होता है दो डिफरेंट रिएक्शन में. इट इज कैरिड आउट इन अ टू फेजेस. फेज वन, इन दैट यू हैव these kind of reactions: oxidation, reduction, hydrolysis. Oxidation, reduction, hydrolysis. These three are there in a phase one reaction. So out of that, oxidation is the most common. You have to remember last year में क्वेश्चन आया था. Oxidation is the most common phase one reaction. Phase one reaction, they are known as a they are known as a non-synthetic reaction. Phase one reactions, they are known as a non-synthetic reaction. Okay. And now what is the main aim of phase one reaction? Phase one reaction का main काम क्या होता है? इनका main काम होता है to impart a polar groups in the molecule. आपका जो molecule है non polar molecule मतलब drug, so it is being converted into polar molecule. That is the main function of your मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का काम ही क्या है? मेन काम कि जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, जो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है, उसको आयनाइज करना है, उसको वाटर सोल्यूबल बनाना है. तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसमें पोलर ग्रुप्स ऐड करना पड़ेगा. कौन से ग्रुप? पोलर ग्रुप. कौन से होते हैं पोलर ग्रुप? उसमें होता है OH ग्रुप. जैसे OH ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया. सो एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स, if they are added to a molecule become polar. Okay, and that is the phase one reaction. What is the main inference of phase one reaction? To impart a polar groups. ठीक है, लिखा नहीं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. Now phase second metabolism, they are known as a synthetic reaction or conjugation reaction. phase second को क्या बोलेंगे? conjugation और synthetic reaction. Now in that you have different conjugation reactions like glucuronide conjugation, then acetylation, then methylation, sulfate conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation, glucuronide conjugation, okay, then acetylation, then methylation, sulfate conjugation, glycine conjugation and glutathione. मतलब क्या कि जो फेज सेकंड रिएक्शन होते हैं, ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन मतलब क्या कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो एक ग्लूकोनिक एसिड बनता है. क्या बनता है? ग्लूकोयूरिनिक एसिड. ग्लूकोज का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होके ग्लूकोयूरिनिक एसिड बनता है. वो क्या होता है? बहुत ही पोलर होता है. ठीक है. तो अभी नॉन पोलर ड्रग है आपका, उसमें फेज वन ने क्या किया? कुछ पोलर ग्रुप्स ऐड करने का ट्राई किया, लेकिन वो उसका पोलरिटी चेंज नहीं हुआ कि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है. तो तब क्या करेंगे? बॉडी क्या करती है? फिर ग्लूकोयूरिनिक एसिड को बुलाती है, चल तू आजा और ये पूरे पूरे के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर, मतलब हनी ट्रैप करती है. ग्लूकोयूरिनिक एसिड you will combine with that lipid soluble molecule, and now that conjugated molecule will be removed from the urine. So glucuronide conjugation, and remember it is the most common phase second reaction. Most common phase second reaction कौन सा होता है? glucuronide conjugation. Most common phase one कौन सा होता है? oxidation. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया. क्वेश्चन डायरेक्टली था कि मोस्ट कॉमन फेज वन एंड फेज सेकंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन था. और नीचे ऑप्शन में था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, hydrolysis, oxidation, conjugation, hydrolysis. So you have to remember most common phase 1 reaction is oxidation, most common phase 2 reaction is a glucuronide conjugation. Now third is acetylation. So acetylation मतलब acetylation means addition of acetyl group, OCH3 group. ठीक है.
So now for this acetylation reaction you need a one enzyme known as N-acetyl transferase. ये enzyme लगता है and this enzyme is coded by different gene. इसके लिए genes जो होते हैं हर एक में अलग अलग होते हैं. Multiple genes controls the production of this N-acetyl transferase and the rate of acetylation will show genetic polymorphism. एक क्वेश्चन आ चुका है देखो, genetic polymorphism is related with which phase of metabolism? Genetic polymorphism is related with the acetylation. You have to remember. So कुछ में कुछ few people will have high capacity to acetylate the drug. Few people will have less capacity to acetylate the drug because depending upon the genetic polymorphism. So that's why depending on that people's or patients or subjects are divided into two types: slow acetylators and rapid acetylators. Slow acetylators मतलब जो slowly metabolize करेंगे acetylation का acetylation से, rapid acetylators मतलब वो जल्दी जल्दी acetylation करेंगे. Now acetylation reaction is very important in the metabolism of acetylation reaction is very important in the metabolism of sulfonamides, then pyrazinamide, then isoniazide. Isoniazide is an anti-tubercular drug. आइसोनियाजाइड के एस्टाइलेशन होता है, पायरेजिनामाइड का एस्टाइलेशन होता है, सल्फोनामाइड का एस्टाइलेशन होता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्टाइलेशन. देन मिथाइलेशन मींस एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. सल्फेट कॉन्जुगेशन मींस एडिशन ऑफ सल्फेट. ओके, देन ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन मींस एडिशन ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड. ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड. व्हिच काइंड ऑफ अमीनो एसिड? इट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड आउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड. कितने अमीनो एसिड आपके बॉडी में? 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने हैं? 20. आउट ऑफ दैट ग्लाइसिन इज अ वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड. ग्लाइसिन क्या है? पहला अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन एंड इट विल नॉट हैव एनी कायरल सेंटर. इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता है. सो दिस विल नॉट हैव एनी asymmetric center or chiral center and that's why it is known as a optically inactive amino acid. ये क्या है? optically inactive होता है. Then glycine conjugation, after that glutathione conjugation. So glutathione conjugation, it is again very very important reaction and glutathione conjugation is important for the detoxification of paracetamol. Paracetamol का अगर overdose हो गया आपको, so paracetamol is metabolized by or paracetamol is removed by this glutathione conjugation. ये ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है ना, उससे पैरासिटामोल का मेटाबोलाइट बनता है और वो मेटाबोलाइट रिमूव किया जाता है बॉडी से. इन केस ऑफ पैरासिटामोल ओवरडोज तो आपका एक मेटाबोलाइट बनता है. इन केस ऑफ पैरासिटामोल ओवरडोज देयर इज जनरेशन ऑफ वन मेटाबोलाइट नोन एज एन एसिटिल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन इमाइन. एन एसिटिल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन इमाइन, NBKY. इसका लॉन्ग फॉर्म होता है एन एसिटिल बेंजोक्विनोन इमाइन, राइट? So N-acetyl benzoquinone amine is the metabolite if paracetamol is taken in a large doses and that metabolites react with the liver cell to cause hepatotoxicity. To remove the metabolite, you have to increase the glutathione conjugation. And for synthesis of glutathione, you need a N-acetylcysteine. N-acetylcysteine is an antidote for paracetamol poisoning, and that's how it relieves the paracetamol poisoning. Actually, I will explain that part in a minute. We'll see NSAID. Now आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इन द एट्राक्यूरियम. एट्राक्यूरियम क्या है? एट्राक्यूरियम इज नथिंग बट द ड्रग नोन एज अ मसल रिलैक्सर. ओके, सो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट in the metabolism of etracurium is a Hofmann elimination, right? Most of the drugs they are metabolized by microsomal enzyme known as a CYP P450. CYP P450. P के आगे CYP लगा. CYP मतलब cytochrome P450. So why they are known as P450? Because they absorb the UV radiation. Absorption maxima is a 450 nanometer. They have different isoenzyme. उसमें भी बहुत सारा फैमिली होता है. Few drugs they are removed from the body without metabolism. Few drugs they are removed from the body as such. देखो यहाँ पे. So they are few drugs are eliminated unchanged from the body. Okay? जैसे ड्रग लिया वैसे उसका एक्शन वैसे ही रिमूव हो जाए. So unchanged. Few drugs they undergo phase 1 metabolism. The drug become polar, so that will be removed. Okay? If that drug will not become polar, then again it will go undergo phase 2 metabolism and then it will be removed. Okay? Again, few drug they will undergo directly phase 2 metabolism and they will be removed. Right? And next one is we have already seen. So in case of acetylation reaction, phase
फिर सेकंड में जो acetylation रिएक्शन होता है, so people has genetic variation in the acetylation, so depending on that a slow acetylation rapid acetylation. so देखो यहाँ पे यूएस में जो white people होते हैं, white peoples of USA and Canada, so out of 100%, 45% is a slow acetylation and 55% is a rapid acetylation. In case of black people of the USA, so 48% are slow acetylation, 52% are rapid acetylation. In case of Latin American people, 67% are slow acetylation, 33% rapid acetylation. In case of Japanese, okay, in case of Japanese, 87% are slow accelerators, 13% are rapid accelerators. In case of American Indians, 79% slow accelerators, 21% rapid accelerators. Eskimos, Canada, Greenland, Russia की जो है, in that you have 98% slow accelerators, only 5% rapid accelerators. Light just here. Light का issue हो सकता है maybe. Orientalist people, 100% of these 100% of these people they are a rapid accelerator. तो देखो those people who are slow accelerators, तो उसमें डोज जो है आपका डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है. तो स्लो accelerators जो है इसमें डोज डिक्रीज करना है, रैपिड accelerators जो है उसमें डोज इंक्रीज करना है. रैपिड accelerators मतलब फास्ट accelerators, तो जो जल्दी जल्दी मेटाबॉलाइज करते हैं ड्रग को तो उसको डोज बढ़ाना पड़ता है, और जो कम मेटाबॉलिज्म करते हैं उनमें डोज कम करना पड़ता है. ओके. Now examples of metabolic reaction with the respective drug undergoing the biotransformation. मतलब हर एक ड्रग कौन सा एग्जाम्पल है ड्रग का and its metabolism pathway. So examples of metabolic reaction and respective example of drug undergoing the metabolism. So first is nothing but the phase 1 metabolism known as non-synthetic metabolism. So उसमें आता है पहला ऑक्सीडेशन. So this drug phenidine, diazepam, ibuprofen, amphetamine, chlorpromazine and dapsone, they will undergo oxidation reaction. अगर ये ड्रग लिए आपने तो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा बॉडी में और उसका मेटाबॉलिज्म बनेगा और मेटाबोलाइट रिमूव किया जाएगा. सो phenidine will be oxidized, diazepam will be oxidized, amphetamine, chlorpromazine, dapsone, they will be oxidized. Okay, oxidation मतलब क्या, addition of hydroxyl group. Then reduction, okay, chemistry मेरा उतना अच्छा नहीं है. Then next one is the reduction. So chloramphenicol and halothane, they undergo reduction reaction. Then hydrolysis, pethidine and procaine, जितने भी आपके local anesthetic drug होते हैं, procaine, okay, prilocaine, lignocaine, they undergo hydrolysis. Then phase second reaction, they are known as a conjugation reaction. So glucuronide conjugation किसका होगा, chloramphenicol morphine. ओके. सो ग्लूकोयूरिनेट मतलब ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होके ग्लूकोयूरिनिक एसिड बनता है. तो ग्लूकोयूरिनिक एसिड प्लस आपका ड्रग मेटाबोलाइट, उसका जब कॉन्जुगेशन होगा उसको बोलते हैं ग्लूकोयूरिनेट कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है मॉर्फिन. सो मॉर्फिन, व्हाट इज मॉर्फिन, इट इज अ नार्कोटिक ड्रग. ठीक है. मॉर्फिन का ग्लूकोयूरिनेट कॉन्जुगेशन होता है एंड एक मेटाबोलाइट बनता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनिक एसिड, मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनिक एसिड. So this metabolite is generated, morphine 6 glucoinic acid, and that metabolite is removed from body. Okay. Now as these drugs are metabolized by acetylation, isoniazide sulfonamides. These drugs are metabolized by methylation. For example, histamine, adrenaline, and paracetamol is metabolized by this glutathione conjugation. We have already seen. That's why I am taking fast. Now most of the drugs are metabolized by CYP3A 4/5. As it is question आ चुका है GPAT में, most of the drugs they are metabolized by this enzyme. CYP3A4, it is a cytochrome enzyme of liver origin, microsomal enzyme होता है. इसके बहुत सारे isotypes थे. Microsomal enzymes will have different isotypes. So out of that CYP3A4/5, this enzyme metabolizes the 36% of total drugs, and that's why most of the drugs they are metabolized by this enzyme. Question आ चुका है. Now you can see over here different microsomal enzymes and their contribution in the metabolism. कि हर एक IC enzyme जो होता है CYP P450 का, तो उसका कौन सा एंजाइम कितना परसेंट मेटाबॉलिज्म करता है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो CYP 450 IC enzyme relative contribution in the metabolism. So out of that first one is a CYP3A4. It has a 36% contribution in the metabolism. तो ये 36% मेटाबॉलिज्म करता है.
Now after that CYP 2D6, so 19% metabolism. After that CYP 2 C9/9, 16%. After that CYP1 A2 A 11% metabolism का. After that CYP2 C19 8%. ठीक है. After that CYP2 E1 4%. After that CYP2 A6 3%. Lastly CYP2 B6 3%. So you can see over here. So इसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कौन करता है? CYP3A/4. ठीक है. ये कितना परसेंट करता है? 36%. CYP3A/4. That's why यहाँ पे वो है. ठीक है. So most of the drugs are metabolized by CYP3A4. एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, एक बार इसके ऊपर भी आया. After the CYP3A4/5, the following cytochrome isoenzyme will have highest metabolism contribution. ठीक है. CYP3A4 च्या नंतर दुसरा कुठला आणखी आयसोएन्झाइम आहे? CYP4 ज्याचा मेटाबॉलिझम मध्ये एक रिमार्केबल कॉन्ट्रिब्यूशन आहे. दॅट इज CYP2D6. So 2D6 19% metabolism करता है. So after the CYP3A4, CYP2D6. Okay, याद रखो. Enzyme inducer, enzyme inhibitors. Enzyme inducer means what? So those drugs which increases the metabolism. Okay, enzyme inducers. So these are the drugs which increases the enzymes responsible for the metabolism. Okay, so these are the drugs which increases the enzymes responsible for the metabolism. Okay, they are known as enzyme inducer. अगर कोई एंजाइम इंड्यूसर है तो वो एंजाइम जो होते हैं मेटाबॉलिज्म करने वाले उसका लेवल बढ़ाता है, एंड अगर दूसरा ड्रग उसके साथ में दिया है तो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी करता है. ठीक है. अगर एंजाइम इनहिबिटर्स. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स व्हिच डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म. ये क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म का एंजाइम जो है उसको कम करेंगे. दैट्स व्हाई concurrent use of enzyme inducer with another drug will increase the metabolism of another drug. Concurrent use of enzyme inhibitors will decrease the metabolism of another drug. अगर enzyme inducer आप दे रहे हो किसी ड्रग के साथ में तो उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा. अगर enzyme inhibitor दे रहे हो किसी ड्रग के साथ में तो उसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा. राइट. So we'll see what are the examples of enzyme inducer, enzyme inhibitors. So drug induced acceleration of the metabolism of drug. ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले ड्रग कौन से? एंजाइम इंड्यूसर्स. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज बार्बिटूरेट्स. सो बार्बिटूरेट्स आर नथिंग बट द एंजाइम इंड्यूसर. दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, एंड दैट्स व्हाई दे विल इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग. इनके ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा वो. ठीक है. लाइक बार्बिटूरेट्स, ओरल एंटीकोगुलेंट्स, स्टेरॉइडल ड्रग्स, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन विटामिन डी, विटामिन के, थायरोक्सिन, फिनाइलब्यूटाजोन, ग्रिजियोफुल्विन, क्लोराम्फेनिकोल एंड थियोफाइलिन. तो जब आप सेकंड कॉलम के ड्रग जो ये जो ड्रग है ये अगर बार्बिटूरेट के साथ में देंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाएगा. यू हैव टू इंक्रीज द डोज. ओके, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज अ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक में को प्रॉब्लम कर रहे थे उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन. सो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? So alteration of kinetics by concurrent use of two drugs. दो ड्रग आपने दे दिए तो एक ड्रग क्या कर रहा है? उसको प्रोटीन बाइंडिंग से डिस्प्लेस कर रहा है. There is a distribution type of interaction. एक ड्रग दे दिया, दो ड्रग दे दिया अपने साथ में, एक ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है तो वो दूसरे का मेटाबॉलिज्म जल्दी करेगा. This kind of interaction is known as metabolism interaction. So due to drug interaction there might be changes in the pharmacokinetics of the drug, there might be changes in the pharmacodynamics of it. Right. So next example is nothing but the phenytoin. Next example is nothing but the phenytoin. So phenytoin is an enzyme inducer and it increases the level of enzyme and increases the metabolism of glucocorticoid, vitamin D and theophylline. Right. Now third example is the griziopulin. Griziopulin क्या है? It is a antifungal antibiotic. So it increases the metabolism of warfarin. Phenytoin क्या है? It is a anti-epileptic drug used in the treatment of epilepsy. Then rifampin. Rifampicin is a drug used in the tuberculosis. It is an antibiotic. So it increases the metabolism of oral contraceptive glucocorticoid, metoprolol. Carbamazepine is an antipsychotic. It increases the metabolism of vitamin D. एक बार क्वेश्चन आ चुका है. Another drug, diclofenac and gamma benzene hydrochloride. Diclofenac and gamma benzene. Diclofenac तो यूज नहीं करते लेकिन gamma benzene hydrochloride is the drug used in the
स्केबीज. स्केबीज मध्ये काय, स्केबीज मतलब काय, खरूज. जे कुत्र्यांना खरूज येत असते ती माणसांना पण येते, कारण माणसं बी आजकाल काय झालं, कुत्रे झाले, ते तोडायला पाहतात, तर माणसाला पण खरूज होती. सो स्केबीज इज नथिंग बट द खरूज. So in the treatment of scabies, gamma benzene is used. Gamma benzene hydrochloride. Now it is a very powerful enzyme inducer. तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम को प्रोडक्शन बढ़ा देता है. That's why it can cause metabolic interaction. Drug drug metabolism interaction. Again nicotine. Nicotine क्या है? It is the alkaloid obtained from Nicotina lobia. ठीक है, निकोटीन क्या है, अल्कोलॉइड जो आपका टोबैको होता है और जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं. सो इन दैट यू हैव निकोटीन. सो इट इज अ पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर. ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस. नीचे ऑप्शन में था एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, ऑप्शन सी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन था. सो निकोटीन इज अ पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर. सो सिगरेट स्मोकिंग इज अ एंजाइम इंड्यूसर्स. जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं चेन स्मोकर, सो उनमें ज्यादा डोज देना पड़ता है आपको, बिकॉज उनमें क्या होता है कि एंजाइम इंड्यूस हो चुके होते हैं और वो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म करते हैं. सो दैट्स व्हाई इन अ चेन स्मोकर यू नीड टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग, राइट. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द ड्रग इंड्यूस्ड इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. तो ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स है. पहले थे इंड्यूसर्स, तो वो एंजाइम को बढ़ा देते, अभी ये एंजाइम इनहिबिटर्स थे. ये क्या करेंगे, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को प्रोडक्शन जो है वो उसका कम करेंगे. फर्स्ट वन इज एलोपिरिनॉल. एलोपिरिनॉल इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. इट इज अ xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर. ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इट्स ओके, ये बाद में आपको आएगा, ठीक है, तब बोलूंगा मैं. तो एलोपिरिनॉल इज अ xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. Okay, so it is an enzyme inhibitor, so it decreases the production of metabolizing enzyme, and that's why it decreases the metabolism of these drugs. Tolbutamide, methotrexate, probenecid, ये जो ड्रग है उनके मेटाबॉलिज्म कम करेगा. Then again disulfiram. Disulfiram is a drug used in the alcohol dependence. जो अल्कोहल की लत लगी जिसको, जिनमें भी अल्कोहल का लत लग चुका है, उनका लत छिडवण्यासाठी के लिए जे बेवडे आहेत 90 पंटर, ठीक आहे, जे बेवडे असतात ते 90 पंटर असतात, त्यांचं दारू सोडवण्यासाठी डायसल्फिरम नावाचा ड्रग यूज केला जातो. सो दो बेवडे लोगों के लिए ये ड्रग यूज किया जाता है टू cause de-addiction of alcohol. It is an enzyme inhibitor, so it inhibits the metabolism of these alcohol, then warfarin, phenytoin, and tolbutamide. So इसका mechanism होता है aldehyde dehydrogenase inhibitor. So this enzyme inhibit the aldehyde dehydrogenase, which is an important step in the metabolism of alcohol. Okay, वो अब जब अल्कोहल मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बोलूंगा. Now again isoniazide. Isoniazide is enzyme inhibitor. It decreases the metabolism of this drug. Glucocorticoid, oral contraceptives, carbamazepine, phenytoin. Then again chloramphenicol. It is an antibiotic. Okay, so broad spectrum antibiotic होता है. It also decreases the metabolism of these propenicillin and tolbutamide. Then cimetidine. It is a histamine 2 receptor blocker. ये क्या होता है, histamine 2 receptor blocker होता है. It is a drug used in the acidity. लेकिन आजकल यूज नहीं करते बिकॉज इट इज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट एंड इट कॉजेज गायनेकोमास्टिया इन द मेल. ठीक है, ये आपके सर के ऊपर से जाएगा. सिमेंटेडिन कॉजेज डिक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन एंड डायazepam. The next one is a fluoxetine. It is a selective serotonin reuptake inhibitor used in the treatment of depression. सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, डिप्रेशन झालं होतं है ना, बॉलीवुड का हीरो सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा बोलते हैं कि उसको डिप्रेशन हुआ था. तो ये एंटी डिप्रेसेंट है, और ये एंटी डिप्रेसेंट जितने भी ड्रग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं. ये एंटी डिप्रेसेंट वाले जो ड्रग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं. एंड अपन क्या है, अपन से बोलते रहते हैं सबसे कातिल गौतम पाटिल, लेकिन सबसे कातिल कौन है, फ्लोएक्सेटिन. बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अगर थेरेपी चालू है और विड्रॉ किया, सो व्हाट विल हैपन, सुसाइड टेंडेंसी. इसमें आता है सुसाइड टेंडेंसी. जिसने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लिए और बीच में ही छोड़ दिए, तो उसका क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है. सो फ्लोएक्सेटिन और एंटी डिप्रेसेंट्स दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी. तो सबसे कातिल गौतम पाटिल नहीं है यहाँ पे, सबसे कातिल कौन है, फ्लोएक्सेटिन, राइट. इट डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन, बेंजोडाइजेपिन एंड phenytoin, राइट. अगेन this erythromycin is a antibiotic, macrolide antibiotic. It decreases the metabolism of these drugs. Amiodarone, digoxin, antipsychotics. ये आपको पूछेगा नहीं कोई, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ चुका है कीटोकोनाजोल. ठीक है, कीटोकोनाजोल इज अ एंजाइम इनहिबिटर.
तो पूछा था कि कीटोकोनाजोल इज अ एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर. Ketoconazole is an antifungal drug. So it is an enzyme inhibitor. It decreases the metabolism of this terpenadine, estimazole, and cyclosporine. Then phenylbutazone is a NSAID, analgesic anti-inflammatory drug, decreases the metabolism of this phenytoin and tolbutamide. Ethanol क्या है? जो बेवड़े पीते हैं उनको मालूम है. So ethanol is a enzyme inhibitor. It is a competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase. So that's why ethanol is used in the treatment of methanol poisoning. मिथेनॉल पॉइझनिंग में आपने न्यूज देखा होगा एक गावठी दारू पिल्यामुळे 10 लोकांचा मृत्यू. कारण काय? गावठी दारू म्हणजे काय? रॉ अल्कोहोल और रॉ वायनरी मीन्स जे नदीच्या कडेला ड्रम लावून बसले असतात ना तर ते काय करतात मग गुळ घेतात गुळापासून ते दारू बनवतात. कधी कधी काय होतं सो व्हॉट इज मीन बाय म्हणजे दारू म्हणजे काय असते सो दारू इज नथिंग बट द इथेनॉल. सो इफ देर इज अ फर्मेंटेशन ऑफ that raw jaggery. So in that fermentation, most of the times ethanol is generated, but but due to some adulteration and all that, sometimes methanol is also generated. दारू कोणती आहे पिण्यासाठी इथेनॉल आहे पण तुम्ही काय पिऊ राहिले इथेनॉल विथ मिथेनॉल. So that is a when will I will see alcohol at that time I will explain you. Then valproic acid. Valproate is also enzyme inhibitor, decreases the metabolism lamotrigine. Both these drugs are used in the treatment of your epilepsy. Now grapefruit juice है ना आप बड़े प्यार से खाते हो. काले अंगूर, गोरे अंगूर, आजकल नया है लाल अंगूर, काले अंगूर, ग्रीन ग्रेप्स, ब्लॅक ग्रेप्स और आजकल नए आए वो कुठून आणले काय माहिती लाल कलरचे दाणशे. Grapefruit juice, it contains was chemical known as a solarin and that is an enzyme inhibitor. So it decreases the metabolism of the cyclosporine, terpenadine, calcium channel blockers. काही पण होते आजकाल म्हणजे काळे द्राक्षे पिवळे द्राक्षे काही पण येत म्हणजे भाज्या सुद्धा पिवळ्यावर आल्या असतात वेगळ्याच कलरच्या. काही जण मी काय म्हणजे मार्केटमध्ये गोबी पाहिली गोबी काय ती पर्पल कलरची गोबी काही पण येत. सो अगेन यू कॅन सी ओव्हर हियर. सो हे झालेलं आहे ऑलरेडी. CYP P450 3A slash 3A4/5 that will metabolize around 50% of drug. So most commonly in the mother. That's why most of the drugs are metabolized by CYP P450 3A/45. सबस्टेट मतलब कोणाचा मेटाबॉलिझम करतात सो ॲस्टिमॅझोल, सिसाप्राइड, टर्पेनाइडिन, सायक्लोस्पोरिन, ओके कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर, टार्कोलिमस, देन प्रोटीएज इनहिबिटर्स, अँटीवायरल ड्रग्स अँड दिस इस्ट्रोजन. सो ये सगळ्यांचा मेटाबॉलिझम कोण करतो CYP3A4/5. नाउ इसको एन्झाइम इंड्यूसर कोण आहे याचं प्रोडक्शन वाढवणारे ड्रग कुठले सो दिस बार्बिट्रेट, रिपम्पिसिन, फिनिटोइन, carbamazepine and estrogen onward, they will increase the production of this CYP3A4. And these are the drug erythromycin, ketoconazole, fluconazole, grapefruit juice. They will decrease the production of CYP P453A/4. तो ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ये प्रोडक्शन इंक्रीज करतील आणि हा डिक्रीज करेल. ठीक आहे. CYP2D6 so 20% metabolism करता है and these are the drugs which metabolize. Most of the antidepressant drugs, tricyclic antidepressant, MAO inhibitors and then beta blockers, they are metabolized by this drug. Inducer कौन है इसका अभी तक मालूम नहीं पड़ा है. Inhibitor कौन है Kinetics and paroxetine. So they will decrease the production of this CYP2D6. अगर ये ड्रग इनके साथ में लेंगे तो इनका डोज क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इनका डोज कम करना पड़ेगा. अगर ये ड्रग इंड्यूसर इनके साथ में लेंगे तो इनका डोज बढ़ाना पड़ेगा. इनहिबिटर इनके साथ मिलेंगे तो इनका डोज क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा. अगेन CYP2619 so they metabolize the omeprazole and clopidogrel. so inducer कौन है rifampicin barbiturates, inhibitor कौन है fluconazole. then CYP269 है ना इसका ये मेटाबोलाइज करता है किसको so it will metabolize phenytoin, tolbutamide and warfarin. So induced by rifampicin barbiturates, inhibited by erythromycin cimetidine. Now again CYP1A2 that is a metabolizes theophylline and warfarin. These are the substrates. Now okay induced by cigarette smoking and rifampicin, inhibited by ciprofloxacin. Again CYP2E1 so it metabolizes the halothane that is a
that is anesthetic agent in paracetamol. Okay, and who are the inducer? Inducer कौन है उसका? देखो inducer is nothing but the ethanol. So ethanol induces the metabolism of, so last enzyme CYP2E1. So it metabolizes the acetaminophene and chlorine halothane induced by ethanol and inhibited by disulfide. ठीक है, so these are the just examples. आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि एंजाइम इंड्यूसर क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, कौन एंजाइम इंड्यूसर है। एक दो का एग्जांपल याद रखो, जैसे बारबिटरेट्स आर एंजाइम इंड्यूसर्स, एसटी जॉन वॉट इज एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इनहिबिटर्स कौन है? जो एंटी फंगल ड्रग है, कीटोकोनाजोल, प्रोकोनाजोल। देन ग्रेपफ्रूट जूस, दैट इज एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इंड्यूसर कौन है? सिगरेट स्मोकिंग। ये कॉमन क्वेश्चन है, सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बारबिटरेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कीटोकोनाजोल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो दैट्स व्हाई वो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। देखो एक चार्ट है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स का, इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। सो सपोज दैट तुम्ही खूप हुशार आहात, तुम्ही सायंटिस्ट होणार आहात. सो सपोज दैट यू हॅव आयसोलेटेड वन ड्रग फ्रॉम द हर्बल प्लांट, or if you have synthesized any chemical or any drug from the laboratory, मी लॅब मध्ये काही सिंथेसिस केलं किंवा हर्बल ड्रग मधनं कुठलं एक्स्ट्रॅक्ट मधलं काही आयसोलेट केलं किंवा एखादं मिनरल ओरिजिनचं किंवा कुठलं तरी एखादं पेप्टाइड तुम्ही एनिमल मधनं आयसोलेट केलं, एंड यू थिंक आप सोच सकते हो, आपको कौन रोकने वाला है, आप कुछ भी सोच सकते हो कि कल मैं करोड़पति बन गए। सोचने में क्या जाता है, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता कि आपने अगर सोचा कि मैंने एंटीडायबिटिक ड्रग बनाया और दूसरे दिन मैं करोड़पति बन गया, ठीक है, आपको क्या है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। सपोज यू डेव्हलप अ न्यू ड्रग नाव, तुम्हाला वाटलं का हा ड्रग मी अँटीडायबिटिकसाठी बनवतोय आणि तुम्ही डेव्हलप केला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्ट दैट ड्रग इन एनिमल्स। पहले आपको एनिमल में स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, सो इन दैट यू हैव डिफरेंट एनिमल्स लाइक माइस, rat, rabbits, guinea pig, dogs, donkey, cats, etc., right? So those animals are divided into two classes: small animals and large animals. Small animals कौन है? Mice, rat, okay, guinea pig, okay, then rabbit. They are frog. They are the small animals. Large animals कौन है? Monkey, dogs, dogs. They are the large animals. And if you get a if you get a good result in the preclinical studies, you have to submit the preclinical data. जो काय प्रीक्लिनिकल डाटा आहे तुमचा, स्टडी केलाय तुम्ही डॉग कुत्र्यावरती, कुत्र्याला मारून टाकलेलं किंवा तुम्ही रॅट किंवा माईस किंवा फ्रॉग्स बेडके धरले, बेडके मारले, ठीक आहे, तुमच्या ड्रगचा जो काय रिझल्ट असेल तो तुम्हाला काय करायचं आहे, यू हॅव टू सबमिट युअर प्रीक्लिनिकल डाटा टू द FDA. ओके, जर तुम्हाला वाटलं की प्रीक्लिनिकल डाटा सॅटिस्फॅक्टरी, if you think preclinical data is satisfactory to get a permission for clinical trials. पहिल्यांदा तुम्ही जर ड्रग केलं सिंथेसाइज तर माणसामध्ये यूज केलं ना तर ते माणूस जाईल मरून। सो आपने जो सिंथेसाइज किया है ड्रग वो डायरेक्टली आप ह्यूमंस पे यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू टेस्ट दैट ड्रग फर्स्ट इन एनिमल्स। इफ यू गेट a satisfactory results in the animal studies, then you have to apply for clinical trials. And now after the satisfactory result, and if they grant you the clinical trials, then you have to conduct the clinical trials or different phases of clinical trials. NDA फाइल, NDA क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, आपका जो ड्रग है, आपका ड्रग अगर सेटिस्फैक्टरी प्री क्लिनिकल स्टडीज में आया है तो आपको क्लिनिकल स्टडीज के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, दैट इज NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो नाउ GPAT 19, 20, 21, 22 बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नाउ क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन डिफरेंट फेजेस। Clinical trials are conducted in the different phases. You might have seen during the corona crisis, कोरोना वायरस से पेंडेमिक के टाइम पे आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन आया है, नया नया रिजल्ट वैक्सीन आया है, तो उसका ट्रायल चल रहा है। तो फेज फर्स्ट कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। फेज सेकंड कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। फेज 3 कहाँ पे होगा? फेज 3 डायरेक्टली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, 2-4 जगह पे हो। तो यू माइट हैव सीन दैट। सो क्लिनिकल ट्रायल्स, फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, सो मीन्स क्लिनिकल ट्रायल्स परमिशन यू हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम लोकल FDA, जो भी FDA कंट्री का, वहां से आपको परमिशन लेना पड़ता है टू यूज ए एक्सपेरिमेंटल ड्रग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपको ड्रग टेस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू सबमिट ऑल प्रीक्लिनिकल डाटा टू द FDA, एंड इफ they are satisfied with your data, they can permit a grant or they will give permission for the clinical trials.
Now you have to conduct the clinical trials in the different phases. Now phase 1. Okay. Now phase 1, what is phase 1? Phase 1 is nothing but the you are using first time your experimental drug in the human. So that is the phase 1. And how many number of participants or subjects or volunteers you have to take? So 10 to 100 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. 10 to 100 participants और subjects और volunteers तीनों नाम सेम आहे. सो मोस्टली हेल्दी व्हॉलेंटियर्स आर 100 ते ओके 10 ते 100 लोक घ्यायचे जे चांगले तंदुरुस्त आहेत, जे जवान आहेत. ठीक आहे, म्हातारे माणसं लहान पोरं नाही घ्यायचे. सो 10 to 100 participants हेल्दी वॉलेंटियर्स नॉट फ्रॉम एक्सट्रीम एज. मतलब यहाँ पे बूढ़े लोग लेना नहीं है, आपको बच्चे नहीं लेना है, लेडीज नहीं लेना है. यहाँ पे जो बकरे होते हैं, बकरे बकरे लेना है. बकरे मतलब हमारे मराठी में बकरे बोलते हैं उनको, जो जवान होते हैं उनको बकरे बोलते हैं. जवान पीपल लेना है. सो healthy volunteers. Okay, now most of the time they are healthy volunteers, usually healthy volunteers, but occasionally patients can be included. For example, in case of rare disease or cancer, extreme or last stage of cancer, उस टाइम पे अगर एंटी कैंसर ड्रग है आपका, लास्ट स्टेज का कोई पेशेंट है, वैसे भी वो मरने ही वाला है, तो ड्रग खा गया जिंदा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही मरने ही वाला था ना. सो यूजुअली हेल्दी वॉलंटियर होते हैं, बट इन केस इन एक्सट्रीम केस patient with rare disease or cancer. Then type of study is not important. ये कौन सा टाइप का स्टडी होता है इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया. इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ठीक है अपन ले लेंगे. इट इज ओपन लेवल काइंड ऑफ स्टडी. ओके, देन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस फेज 1 रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? व्हाट इज द मेन पर्पस? टू चेक द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी. तुमचा ड्रग ह्यूमन्स मध्ये सेफ आहे का? आपका ड्रग ह्यूमंस में सेफ है क्या? दैट इज द मेन दैट इज द मेन पर्पस ऑफ फेज 1 clinical studies, whether your drug is safe or tolerated in the humans or not. To check the maximum tolerable dose, इसके ऊपर एज इट क्वेश्चन आ चुका है. टू चेक द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, दैट इज द पर्पस ऑफ फेज फर्स्ट मेडिकल. हर एक बार क्वेश्चन आ चुकी है इसका. क्या है पर्पस? टू चेक द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज. तो इसका ड्यूरेशन होता है कुछ महीने से लेके 1 ईयर तक, फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर. एंड खर्चा आता है $10 million US एंड यू कैन एक्सपेक्ट 50% सक्सेस रेट. ये 3 पॉइंट जो है आपने नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट? हर एक क्लिनिकल ट्रायल का पेज जो है उसमें क्या इम्पोर्टेंट? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, दूसरा ये दोनों पार्ट इम्पोर्टेंट है. सो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस पार्ट इज. सो ये 4 कॉलम जो है वो इम्पोर्टेंट. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ओके, एंड फिफ्थ कॉलम. ओके, नाउ दिस इज फेज 1. अगर फेज 1 में आपका रिजल्ट आ गया, सो इफ योर ड्रग इज प्रॉमिसिंग in the phase 1, if your drug is safe in the phase 1, if your drug is tolerated by the humans, if you know the maximum tolerable dose, then you can submit phase 1 data to the government. Then you can move to the phase 2. What is phase 2? First time you are using your drug in a patients. First time you are using your experimental drug in a patient. So how many number of subjects or participants or volunteers? 50 to 500 people. Okay, 50 ते 500 लोक असणार. So now again patients are homologous. Okay, so patient subjects receiving the experimental drug. Okay, patients or subject they are receiving the experimental drug. यहाँ तक आपका पेशेंट नहीं था, एक खांदा कंडीशन में हो सकता है, एक रेयर कंडीशन में हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्टली हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं. हेल्दी वॉलंटियर. फेज सेकंड में क्या है कि पेशेंट करना है. टाइप ऑफ स्टडी इज रैंडमाइज्ड, कंट्रोल्ड एंड कैन बी प्लेसिबो कंट्रोल्ड और ब्लाइंडेड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज 2 रिएक्शन? एफिकेसी एंड डोज रेंजिंग एस्टैब्लिशमेंट. क्या है पर्पस? एफिकेसी एंड डोज रेंजिंग एस्टैब्लिशमेंट. एफिकेसी मतलब क्या? फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. सो वेदर योर ड्रग हैज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन. सपोज आपने एंटीडायबिटिक ड्रग लिया था, वेदर दैट ड्रग इज एबल टू डिक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल और नॉट. So that is the efficacy. To check the efficacy and dose ranging establishment. तो कितने डोज से कितने डोज तक आप दे सकते हो? 10 mg से लेके 1 ग्राम तक, या 10 mg से लेके 50 mg तक कितना दे सकते हो? डोज रेंजिंग एस्टेब्लिशमेंट. एंड पेन सेकंड इज आल्सो नोन एज थेरापेटिक एक्सप्लॉइटेशन. क्या बोलते हैं उसको? थेरापेटिक एक्सप्लॉइटेशन.
क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. So therapeutic exploitation. Phase second is a therapeutic exploitation. Okay, phase second is a therapeutic exploitation. So this part is important. Okay, so it will take around 1 to 2 years. Okay, and a 20 US million dollar will be the cost. 30% success rate is there. Now, if you got a satisfactory result, तुमचे second phase मध्ये if you got a good result in the phase second, your drug will move into the phase 3. What is phase 3? Phase 3 is known as a multi-site trial. फेज 3 इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. तो पहले फेज में आपको एक ही सेंटर पे स्टडी करना है, दूसरे फेज में भी आपको एक ही सेंटर पे स्टडी करना है. ओके, इन द फर्स्ट फेज यू हैव टू स्टडी इन अ वन सेंटर ओनली. सेकंड फेज में यू हैव टू स्टडी इनटू वन सेंटर ओनली. नाउ फेज 3 इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. फेज 3 इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. साइट मतलब क्या? सेंटर्स. साइट मींस सेंटर्स. ओके, मल्टी साइट ट्रायल. सो यू माइट हैव सीन कोरोना वायरस का जो वैक्सीन. So when there was a initial phases of clinical trials for the corona vaccine, so initial two phases was conducted in the Delhi, and after that multi-site trial, that is a Delhi, Hyderabad, Mumbai, Chennai, etc. So multi-site trial. Okay. Now how many number of subjects? A few hundred to thousands of participants. 200, 300 कुछ. Okay, few hundred to thousands of participants. मतलब यहाँ से यहाँ 500 से लेके 5000 तक. So few hundred to thousands of participants they are included in the phase 3. Okay, question as it आ चुका है GPAT 2019. ऐसा ही क्वेश्चन था लाइन टू लाइन. A few hundred to thousand participants they are included in the which phase of clinical trials which is conducted at a different center. That is a phase 3. Okay. Now what kind of subjects are there? Okay, here patient or subjects are receiving the experimental drug. And what kind of patients or subject? Extreme age, that is geriatric, pediatric and healthy volunteers. मतलब फेज 3 में क्या है? सबको लेके आना है, बूढ़े को, बच्चे को, लेडीज को, सबको लेके आना है. सो इन द फेज 3 all kind of population are there. In the phase first healthy volunteers, in the phase second patients, and in the phase 3 all kind of patients, geriatric, pediatric. Okay, healthy patient कभी healthy नहीं होता, young patients and ladies also. What kind of study is there? Controlled, randomized and controlled, can be placebo controlled or blinded. छोड़ो इसका, doesn't matter. Now what is the main purpose of this study? Main purpose of this study is nothing but to confirm the efficacy in the larger population. ठीक है. पेज सेकंड में आपने क्या किया था? पेज सेकंड में आपने चेक किया कि आपके ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं इन द पेशेंट में चेक किया था. अभी लिमिटेड पेशेंट थे ना, कितने थे यहाँ पे? इतने ही थे. ठीक है, इन द स्मॉलर पॉपुलेशन. तो यहाँ पे फेज 3 में क्या है? फेज 3 इज नथिंग बट द टू चेक द इफिकेसी इन द लार्जर पॉपुलेशन. यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा ना, to check the confirm the efficacy in the larger population. So it is also known as therapeutic confirmation. तो therapeutic confirmation बोलते हैं. So again 3 to 5 years time required. 50 to 100 million dollars खर्चा आएगा. 20 to 25 to 50% success rate, doesn't matter. Now phase 4. ठीक है. Now यहाँ तक जो है, now up to the phase 3 your drug is a experimental. यहाँ तक क्या है? आपका ड्रग क्या है? एक्सपेरिमेंटल ड्रग, ईडी. एक्सपेरिमेंटल ड्रग, ईडी एक्सपेरिमेंटल. यहाँ भी क्या है? एक्सपेरिमेंटल. तो इन द फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज 3, इन दीज 3 योर ड्रग इज एक्सपेरिमेंटल ड्रग. आपका क्या ड्रग है? अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपका ड्रग अप्रूव नहीं किया है. तो अप टू दिस स्टेज phase 1 2 3 your drug is experimental drug. Okay, now if you got a very good result in the phase 3, पहले 3 का रिजल्ट अच्छा आ गया, so you will get you have to apply for the आपको you have to submit all the data phase 1 phase 2 phase 3 the government and FDA will give you grant to market your drug. Okay, after the successful submission of phase 3 clinical data, so if they are satisfactory they will grant you a license to market the drug in the market. And that's why in the phase 4 क्या है? post marketing surveillance. Now in this phase 4 your drug is approved drug. आपका ड्रग क्या है? अप्रूव हो चुका है, approved drug, AD. Your drug is approved drug. Okay? So post marketing surveillance, phase 4 is known as a post marketing surveillance.
We have to remember phase 4 is known as a post marketing surveillance, right? पोस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के बाद में, मार्केटिंग कब कर सकते हो, आपको जब परमिशन मिलेगा तभी करेगा. सो यहाँ पे क्या है, अप्रूव ड्रग. सो अप टू फेज 3 योर ड्रग वाज एक्सपेरिमेंटल ड्रग, इन द फेज 4 योर ड्रग इज अप्रूव ड्रग. क्वेश्चन आ चुका है, अप्रूव ड्रग इज tested in which phase of clinical trial? So phase 4. Okay. Now how many number of subjects? Many thousands of participants. आपका ड्रग मार्केट में आ चुका है, आपको ही मालूम नहीं कितने लोग ले रहे हैं, ठीक है. सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, आपको मालूम नहीं, कुछ लैख, टू थाउजेंड्स अप टू मेनी थाउजेंड्स और अप टू लैक्स, यू डोंट नो कितने लोग ले रहे हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन इन GPAT 21. Okay, as it is, many thousands of participants are included in the which phase of clinical trials. Now what kind of subject? Patients in the treatment of approved drug. Patients जो थे उसमें approved drug का treatment चल रहा है, कौन सा? Approved drug. Because in the phase 4 your drug is approved and it is marketed, it is available in the market for the treatment. So patients are using approved drug, right? Open label type of study is there. What is the main purpose of this phase 4? Main purpose of this phase 4 is nothing but to monitor the adverse drug reaction, to ensure the patient compliance, to check the drug interaction, and to check the long term adverse effect. यहाँ पे क्या है, long term adverse effect. Okay, in the phase 3 यहाँ पे क्या है, phase 3 short term adverse effect, short term adverse effect. यहाँ पे क्या है, short term adverse effect आपको चेक करना है. यहाँ पे क्या है, long term adverse effect, long term adverse effect. Duration क्या है, no fixed duration. Now last stage of clinical trial is known as a phase 0. It is known as a microdosing studies. Phase 0 it is known as a microdosing studies. So most of the books में क्या है, most of the books will have these 4 stages, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. But phase 0 has been recently added. Phase 0 जो है वो recently add किया है. It is known as a microdosing studies. Microdosing studies. So in this healthy volunteers of small numbers मतलब कितनी, 1 to 10, 1 to 10 or 1 to 5. So number of participants. So dose कितना यूज करना है, 1/100th of dose. Okay, so 1/100th of dose. Then what is the purpose? To know the pharmacokinetics, absorption, distribution, metabolism, and deletion. That is the purpose of phase 0. Okay, again I will revise you in a very short because it is very important. देखो phase 1 में क्या होता है, 10 to 100 participants, mostly healthy volunteers. Okay, of the uniform age. Then okay, what is the purpose? Safety and tolerability, to know the maximum tolerable dose. Okay, what is the phase second? Phase second, you are using your experimental drug in a patient or subject. The phase first, you are using first time your drug, experimental drug in the patient, humans. In the phase second कितने participants होंगे? Participant are nothing but the 50 to 500 participants. What kind of participant? Patient, subject receiving the experimental drug. What is the purpose of phase second? The purpose is nothing but the therapeutic exploitation or to check the efficacy of drug. Therapeutic exploitation therapy. Now what is the phase 3? Phase 3 is known as a multi-site trials, right? Multi-site trials. How many number of participants? A few hundred to 1,000 participants. A few hundred to 1,000 participants. Question answer. What type of patients? Patients are receiving the experimental drug. Extreme age patient मतलब सभी बच्चे बूढ़े, okay, geriatric, pediatric and young people. What is the purpose? It is known as therapeutic confirmation. Therapeutic confirmation in the larger population and to know the short term adverse effect. यहाँ पे नहीं लिखा है. To know the short term adverse effect. Okay. Now phase 4 known as the post marketing surveillance. Many thousands of participants are included in the phase 4 and patients are having approved drug treatment. Now what is the purpose? To know the adverse drug reactions, compliance, patient compliance, drug interaction, long term adverse effect. Last stage होता है आपका microdosing studies. So what is the purpose? To know the pharmacokinetics.